तो 3 बेडरूम का डिजाइन। फर्स्ट कॉलम 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, इधर कॉलम नहीं रहेगा। टोटल 8 नंबर कॉलम। नेक्स्ट 9, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, 12 and 6। मेन पोर्टिको एरिया, पोर्च एरिया, wall 8 feet 6 inch height, outside wall 250 mm, outer partition wall and internal partition wall 250 mm. Total 3 bedroom house plan design, 2 bathroom latrine, 1 kitchen, 1 dining drawing area and stair room area. Next, door and window. First 7 feet 2.1 meter, depth 4 feet 6 inch, 1350 millimeter, window and door. Main front door 7 feet 2.1 meter, 5 feet 1.5 meter wide, main gate size. ओके, साथ में हम कुछ फर्नीचर लेआउट प्लान और 2D ड्राइंग के साथ डिजाइन फाइनल करते हैं। इससे पहले इसका स्टेयर इधर 3D के साथ ड्रॉ कर लेंगे। फाइनल डिजाइन, इधर जो फाइनल डिजाइन है इसको हमने रेडी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इधर 1 2 3 4 बेडरूम, टोटल एरिया हम इधर 34 फीट 4 इंच और 42 फीट टोटल लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल स्क्वायर फीट 34 इंटू 42 1428। तो रूम इसका मेजरमेंट क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मेजरमेंट, बेडरूम 12/14 और एक बेडरूम 11/12 और एक बेडरूम 10 फीट 7/11 फीट और एक बेडरूम 12/14, टोटल 4 बेडरूम। किचन 13 feet 8/8 feet 2 and drawing cum dining 20 feet 8 inch by 13 feet 8 inch का डिस्टेंस 3 feet 6 inch and 7 feet 6 inch and 7 feet 4 feet 4 feet and 7 feet 2 inch। बाथरूम एंड लैट्रिन दो रहेगा, इधर बाथरूम लैट्रिन दो, ठीक है। ऐसा रहेगा फाइनल डिजाइन। टोटल बिल्डिंग एरिया हमने इधर कैलकुलेट किया था, जो रहेगा 42 इंटू 30, देखिए 42 इंटू 34। बिल्डिंग कॉस्ट 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट,
28 से 30 लाख रुपीस तक खर्चा आ जाएगा। तो 4 बेडरूम के साथ डिजाइन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी इसमें डिस्प्यूट लगता है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।